फाइनली 5:10 आई थिंक यही कमरा है. जस्ट होप कि हम किसी गलत रूम में नॉक नहीं कर रहे हैं. Come in. हेलो उस्मान मुख्तार, कैसे हैं आप? Hello guys. What's up? क्या तैयारियां चल रही हैं? कहाँ के लिए रेडी हो रहे हैं आप? हम लोग नीचे जा रहे हैं. आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? हम लोगों ने थोड़ा सा जो है ना आई थिंक एस्ट्रोलॉजी यूज की और हमें पता लगा कि आप शायद यही हैं. चलिए अब आप आ गए हैं तो आप भी नाश्ता कीजिए. जी बिल्कुल. अच्छा, बाय द वे वी हैव हर्ड कि आपके घर वालों ने आपको बोर्डिंग स्कूल में भेजा था. इज दैट ट्रू? Yes, that's true. I was in my 4th grade. और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? It's good and bad. I mean, you miss home, you get homesick, and yeah, that's the bad part of it. The memories we made, the things that we did, the kind of the golden nights that we used to have when हम लोगों की छुट्टियाँ दिसंबर में होती थी 3 महीने. यानी बोर्डिंग इतना भी बुरा नहीं है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है. बाय द वे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? My favorite actress in the current time? इन द करंट टाइम, इससे पहले किसी भी टाइम पे? I absolutely love Ma'am Uzma Gilani. She's a brilliant actor. Wow. And I mean, I've always wanted to work with her, but I don't know if I'll ever be able to. But yeah. We hope you do. Yes. आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है अभी तक जिस पे आपने काम किया? There are two. I did this movie called Chakkar. Absolutely love the film. And you were a police officer in it. Yes, and there was a story that needed to be told. And then Umru, I get to live my childhood dream. So, Which leads me to the point कि चिक्कर का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? I mean, Chikkar's experience wasn't bad. It was a very different approach towards filmmaking, जो generally practice नहीं होती पाकिस्तान में. The kind of filmmaking that Zahir Bhai practiced was brilliant. The kind of actors I got the opportunity to work with was amazing. They were trained theatre actors. So I mean, it was a great experience. By the way, आपका दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा था जो आपका फेवरेट है? Umru AR, which is releasing on Eid al-Azha, and I get to live my childhood dream. I am playing Umru AR, which is, I read books about this character when I was a kid, and now I get to kind of play Umru AR, so that's just, it's I can explain. में सबसे मुश्किल चीज क्या थी? The stunts, and I have a height phobia. So I mean, being suspended in the air with the harness and everything was just a bit. आपकी स्टंट टीम भी गेम ऑफ थ्रोन्स और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाली थी. लाइक कैसा एक्सपीरियंस था? उन्होंने कितना सिखाया आपको? We got to learn a lot, G. We got to learn a lot about stunts, and I think everybody did. जितने भी हमारे actors उम्रू के set पे थे, they all got to learn a lot from the stunt team, the production designers, the cinematographer. I love cinematography, so I take a lot of interest in cinematography and stuff. So I got to learn a lot from Ricky as well. आपका सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है अभी तक? It would be Sarmad Zaman from Chakkar. It was a tough shoot. It was a tough experience to kind of. When we were in the police station, we were in the police station. There was not like, it didn't feel like a set. It was like एक्चुअल पुलिस स्टेशन था? no, the set was made very realistically, and it didn't end. You had to walk out of the station to feel like you're out of the movie set, and we spent most of our time in the police station. So it was and then the interrogations and the scenes and the monologue. But why do you think कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उस मूवी को क्यों नहीं देखा फिर, जब वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी और इतनी मेहनत से बनी हुई? I think we don't see. It was a very serious film. It was a slow film. पहले इस तरह की फिल्में बहुत बनती थी. अब I think we don't have the patience. We watch 15-second videos and we get really happy. We don't have the patience to sit and watch a 2.5-hour, 3-hour film. By the way, आप सुबह कॉफी पीते हैं, जूस पीते हैं, क्या पीते हैं? Because हम साथ ऑर्डर कर सकते हैं. Yes, I like black coffee, and I'm gonna order for myself. Do you guys want anything?
नो थैंक यू आप प्लीज कॉफी लें, बट साथ हमें ये बताइए आपका सबसे फेवरेट फैन मूवमेंट कौन सा रहा है अभी तक के, फैन इनकाउंटर हुआ हो कोई ऐसा? Farhan Tahir. It is the most. I'd met him 2 months prior to me finding out that Farhan Tahir is playing. No, actually not 2 months prior. I think about a year prior, because darmiyan mein COVID came and we were all locked down, so we don't remember. But right before COVID, I met him because he was in Islamabad, and after that, Asra calls me up and he tells me that we're making Umru, and I said yes. I didn't know what character I was playing. And आपको नहीं पता था आप क्या कैरेक्टर कर रहे हो? I किस कह दिया? just said yes to Umru. Umru is a story that we as children read, so being part of it would have been amazing. And I asked him who's playing Lakka, the villain, and he said Farhan Tahir, and I actually thought they were pranking me Wow. for a while. Yes. Seriously? Yes. भैया काली कॉफी मिल जाएगी बगैर शुगर? थैंक ब्लैक कॉफी जे अमेरिकानो. से आप ब्लैक कॉफी डाइटिंग के लिए पीते हैं क्या? I actually, it started off as a diet thing, but now I actually enjoy. I like black coffee. I like Americano. So yeah. बाय द वे इस्लामाबाद वालों को बर्गर कहते हैं, आप बर्गर? मैं बिल्कुल बर्गर नहीं जी, मैं पंजाबी से भी गल कर लेना, मैं उर्दू में भी बात कर लेता हूँ, मैं अंग्रेजी में भी बात कर लेता हूँ. मैं बर्गर अपने आप को नहीं बोलूँगा. बट इस क्या इस्लामाबादी बर्गर होते हैं? Yes, I think so. Most of us are. ओके अच्छा चले मुझे ये बताएं कि आपने अपने घर वालों को एक्टिंग के करियर के लिए कैसे कन्विंस किया? Well, it was a long 8-9 years. They didn't want me to go into acting or filmmaking or anything like that. I had to be very persistent for them to let me do it. जो आपका आउटफिट ऑफ द डे, वी थॉट आप कोई ट्रैक सूट टाइप्स किसी ड्रेस में होंगे, बट शलवार कमीज पेशावरी चप्पल. आर यू इंस्पायर्ड बाय इमरान खान? No, we're actually supposed to go to a show right now, which is और हमने मिडवे आपको पकड़ लिया. yes. So right after the breakfast, we're gonna go to this show, and so everybody is wearing shalwar kameez. So ओके सो ये आपका ड्रेस कोड है आज का. बाय द वे वी हैव हर्ड कि शोबिज इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा दोस्ती काम आती है. इज दैट ट्रू? well, I mean, not in. Yes, to a certain extent, yes. There's not. I think there's a lot of favoritism, but बहुत वो भी कुछ जगहों पे है, हर जगह पे नहीं है. काफ़ी ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, काफ़ी ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं जो who deserve the role. or यानी इट्स अ मिक्स एंड मैच. Yes. चीजें हैं कुछ नहीं है. Yes. आपका अब तक का बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है? अब तक का बेस्ट कैरेक्टर, I think people really liked Altamash. I think Altamash is a character that kind of kicked my career off. So Altamash for sure, and Sarmad Zaman and Umro Yaar. ओके आपकी फेवरेट पाकिस्तानी मूवी कौन सी है एक्सेप्ट उम्रो यार ऑफ कोर्स? My favorite Pakistani film would be, I'm not going to name my own films, but I think Lal Kabutar was a very, very good film, and I really इट वाज एन इंटरेस्टिंग मूवी. लेकिन आपने पुरानी मूवीज देखी है, पाकिस्तानी पुरानी मूवीज लाइक चूड़ियां, निकी जय? I remember watching a film of my mother's when I was very young, and she was beating a kid up in that film. और आपको डर लगा वो देख के? And after that, I said, I can't watch more movies of. ओके बाय द वे आप पे बहुत मीम्स बनती है. कोई फेवरेट मीम है आपकी जो आप पे बनी हो और आपको याद भी हो? एक ही मीम है जी, जो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे वो डिस्कस होती है कि मैं जिस खातून, जिस एक्टर के साथ काम करता हूँ उनकी शादी हो जाती है, which is yes, it's a very interesting thing. I sometimes question my own talent. क्या जादू गए थे आप कि उनकी शादी हो जाती? I absolutely have no idea, but I mean, again, it's. चलिए अपना फेवरेट सॉन्ग बता दें हमें कौन सा है? My favorite song is I like a lot of AC/DC, but I have a very bipolar taste in music. I've grown up with, Iron Maiden, AC/DC, Metallica,
But then I also like a block party. I've listened to a lot of jazz and blues. And Pakistan mein, I love Sajad Ali. He's a brilliant artist. किसको नहीं पसंद पार्टी? He is a legend. And I think recent times mein, I think Talal is very good. Talal Qureshi is very good. Indeed. By the way, Lahore, Karachi या इस्लामाबाद, कौन सी जगह आपको ज़्यादा पसंद है? That's not even a question. Islamabad. I've grown up in Islamabad. I love greenery. I love being around mountains and green areas and stuff. So I love Islamabad. बट इस्लामाबाद के फूड के बारे में बहुत लड़ाई रहती है कि वो खाना अच्छा नहीं है. मैं इस चीज़ से एग्री करूँगा. खाना कराची का अच्छा है, no doubt. लाहौर का खाना अच्छा नहीं है? लाहौर का खाना अच्छा है. लाहौर का खाना अच्छा है. But I mean, if you want to talk about one of the best, like, cities for food, it's I personally feel it's Karachi. By the way, प्यार या पैसा? I think पैसा होने के बावजूद भी लोग बड़े I mean, they're not happy. I've seen a lot of people who have a lot of money, but they're not. I feel like pyar. I mean, I'm very lucky to have a wife like Zanera and my mother and my family. So I think pyar. Okay. एक टिप जो आप अपकमिंग एक्टर्स को देना चाहते हैं या जो लोग शोबिज़ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, what is one thing you would like them to know? Do theatre. If you want to become an actor, do theatre. Theatre is the best school for an actor. So theatre is very good, yes. आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है? थिएटर, मूवी या ड्रामा? I can't say that I have one best experience because every drama, films and theatre are very different, and I've had equally amazing experiences while shooting drama. But आप ज़्यादा enjoy किसको करते हैं? I enjoy directing more. अच्छा, यानी कि डायरेक्ट करना ज़्यादा पसंद है, एक्टिंग नहीं? I do like acting, but I just like filmmaking a bit more. Okay, I think अब आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, हमने आपका बहुत टाइम ले लिया, but thank you so much. It was a lot of fun and we absolutely loved it. See you soon. Catch you sometime else. Thank you. Bye. Bye bye.